Good morning, friends. Welcome back. And today we are going to learn about groups and what happens inside and the inside story of the groups, the conflicts of groups, the cooperation inside, loofing, the social facilitation. All this happens in groups have so much of the deep meaning in our life. Mm, uh, you feel like early morning, before coming to the college, you interact with your family members, and in the college also, you meet a lot of the students who are your classmates, and you have friendship with the other class students also, and then in the evening after you leave your college, you go and play with some groups, you interact on phones, or you talk to your other friends of your neighbor. So this shows that every second, every moment, we are being influenced by groups, and groups have a very very important role in our life. बेटा ग्रुप्स जो हैं वो इंसान की पहचान होते हैं. ग्रुप्स जो हैं वो हमें कॉपरेशन सिखाते हैं, कंपटीशन सिखाते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस करते हैं, हमारा मोटिवेशनल लेवल बढ़ाते हैं. ये तो एक संजीवनी की तरह होते हैं बेटा ग्रुप्स. एंड मोस्ट प्रोबेबली आर आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन होता है लाइफ में, उसमें ग्रुप्स का बहुत रोल है. वो कोई भी ग्रुप हो बेटा, एवरीबॉडी ऑफ अस इज अ पार्ट ऑफ वन ग्रुप और अनदर ग्रुप. सो we cannot do with groups. The different groups have different norms, they have different rules and regulations. We need every kind of group. Like for example, we cannot do without our family, and family is the foremost number one primary group of our life. Without family, right, जब से हम पैदा होते हैं और हम बहुत अचीव भी कर लें, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के खुद के अपनी फैमिलीज़ भी बना लें, स्टिल बेटा फैमिली का जो है वो रोल जो है हमारी लाइफ से हटता नहीं है. ग्रुप्स का बड़ा डीप मीनिंग है हमारी ज़िंदगियों में. ग्रुप हैज़ काइंड ऑफ it is the biggest social influence of our life. And previously what we learned about the obedience, the compliance, the conformity, these three terms जो हैं इनकी शुरुआत जो है वो हमारी ज़िंदगियों के ग्रुप्स में होती है. ओबीडियंस, हम पेरेंट्स और अपने एल्डर्स की ओबीडियंस, राइट फ्रॉम इवन बिफोर गोइंग टू द स्कूल्स, बिफोर एंटरिंग द किंडरगार्टन, वी लर्न टू बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट्स. वी लर्न द रूल ऑफ ओबीडियंस. एंड और हम अगर मम्मा पापा ने कोई चीज़ कह दी तो कुछ भी हो जाए, वी आर स्केयर्ड, वी डोंट वांट टू annoy them. And similarly, we learn compliance through various groups, the small groups, the community as a group and the society as a group, and you learn these in schools, the do's and don'ts and norms. So groups जो हैं, they have various aspects beta, various aspects. Number one, ग्रुप्स जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम क्राउड्स एंड टीम्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्राउड में देर इज़ नो इंटरडिपेंडेंस, बट इन ग्रुप्स देर इज़ इंटरडिपेंडेंस. वी आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं. इन ग्रुप्स द सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ ग्रुप इज़ दैट ग्रुप इज़ you have everybody, every member has status in group, a particular status. Like for example, if I take you family as a group, तो उसमें माँ का अपना एक status है which you cannot compete with. Your father has a different status in the group, your dada, dadi, and whosoever, your siblings, the elder sibling, you yourself have the specific roles in it. Not only this beta, there are various aspects of groups. There are norms, there is formation of various kinds of rules into group. So number one aspect is that we are interdependent upon each other. Number two, that there is a particular status of every person inside a group. And then we are
individuals who are trying to satisfy a need through their joint association, फैमिली में अगर कोई या कॉलेज में या फिर आपके प्ले ग्रुप में, आपके पेयर्स में आपका कोई भी फॉर्मल एनजीओ ग्रुप है, कहीं पे भी है, सो यू वर्क एज अ टीम वर्क, यू लर्न द टीम spirit. So the one aspect is, the cohesiveness is a very important aspect of groups. Then beta, we have collection of individuals who are interdependent. We cannot do, if mother will not cook the food, so you will not get your food. If papa will not bring, anything from outside, so you will not get the things. So there is an interdependence. Similarly, young children learn technology and they are more quick in doing, and they are young, they are smart to follow the kind of orders of their parents and others. So it is very, very important to understand the various aspects of group. I'll just say that the collection of individuals whose interactions are structured by a set of, number one beta, rules and norms के बगैर कोई भी ग्रुप नहीं चलता है. ग्रुप में पर्टिकुलर स्टेटस है, हर एक इंसान का, हर एक मेंबर का एक पर्टिकुलर स्टेटस है ग्रुप में, और उसके बावजूद बेटा हम देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंस है ग्रुप में, कोहेसिवनेस है, देयर इज कॉपरेशन in group. So these make the groups very, very important part of our life. So you work like teams, you work like you perform and you learn. There is modeling done beta, imitation and modeling done. You learn from each other. So you have to write everything in the various aspects of the groups. Then beta, a gathering of individuals who interact with one another either directly or indirectly. There are some groups where you don't interact directly. So groups are a kind of the real identity of our life, which is very, very important. Thank you so much.